Hello, good morning, and welcome to hello and welcome to ABC Trainings। तो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं वही जो हमने पिछले सेशन में बात की है, डिजाइन स्किल्स एवरी मैकेनिकल इंजीनियर मस्ट मास्टर इन 2026। सो इन द कमिंग ईयर 2026 which skills are very useful, जो भी यूज़फुल स्किल्स होंगे एज अ मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर। आपको अगर जॉब करनी हो, आपको एज अ मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर इंडस्ट्री में एंट्री करनी हो एज अ फ्रेशर हो, या फिर आप अपने कुछ पास आउट ईयर में हो, तो हम वो आज के सेशन में देखने वाले हैं। ओके, so design skills every mechanical engineer must master in 2026। So this is the roadmap to building प्रैक्टिकल डिज़ाइन एक्सपर्टीज दैट कंपनीज एक्चुअली वैल्यूज। कंपनीज कौन सी जो ऐसी डिज़ाइन की एक्सपर्टीज है जो कंपनीज वैल्यूज देती है, जो स्किल्स कंपनीज को चाहिए एक्चुअल में, प्रैक्टिकल स्किल्स कौन से ऐसे है थ्योरेटिकल नॉलेज को छोड़ के, जो आपको प्लेसमेंट इंटरव्यूज में हेल्प करेगी। तो ऐसे हम ये स्किल्स आज के इस सेशन में देखने वाले हैं। ओके, सो वी विल सी दिस वन बाय वन। ओके, so why design software skills matter more than ever? Graduating with strong theoretical knowledge is essential, but it's no longer sufficient for landing your first engineering role. Today's employers expect candidates to demonstrate practical proficiency with industry standard design tools from day one. Okay, so graduating with strong theoretical challenge नॉलेज इज इसेंशियल है। आप अगर theoretical आपको जो नॉलेज होगा मशीन डिज़ाइन का, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, ओके, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स का, वो सब तो इसेंशियल है ही। पर उसके साथ साथ आपको जब आप एज अ डिज़ाइन इंजीनियर इंडस्ट्री में स्टेप डाउन करते हैं, तो जब आप स्टेप्स रखते हैं डिज़ाइन इंजीनियर एज अ फ्रेशर हो, या फिर आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस हो, जैसे कि क्वालिटी का एक्सपीरियंस हो गया, प्रोडक्शन का, ऐसे मल्टीपल एक्सपीरियंस लोग भी अगर डिज़ाइन इंडस्ट्री में आना चाहेंगे तो उनको थ्योरेटिकल नॉलेज तो चाहिए ही, क्योंकि वो एक बेस है। उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। अभी वो कौन सी स्किल्स है वो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं। ओके, सो टुडेज एम्प्लॉयर्स एक्सपेक्ट कैंडिडेट टू डेमोन्स्ट्रेट प्रैक्टिकल प्रोफिशिएंसी। जो भी एम्प्लॉयर्स होंगे, जो भी आपका इंटरव्यू देंगे, वो आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो कैंडिडेट को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए प्रैक्टिकल प्रोफिशिएंसी जो भी होगी उनकी, विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डिज़ाइन टूल्स फ्रॉम डे वन। मतलब डे वन से ही उन्होंने स्टार्ट कर देना चाहिए। ट्रेनिंग की जो ट्रेनिंग का पीरियड होता है वो मिनिमाइज हो सके, ऐसा उनका गोल होता है, जैसा उनका एम होता है जब वो हायरिंग करते हैं। ओके, सो द गैप बिटवीन एकेडमिक लर्निंग एंड इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट हैज़ वाइडन। ओके, एकेडमिक लर्निंग जो भी आपकी होती है, जो भी आपका सीजीपी होगा, जो भी आपने एकेडमिक्स में सीखा है, 4 साल की इंजीनियरिंग में सीखा है, या फिर 3 साल के डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में जो सीखा है, तो academic learning you have gained, okay, and the industry requirements, the gap, there is a gap and the gap is widening। वो जो गैप है वो बहुत वाइड हो गया है, क्योंकि जो भी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स है वो स्किल्स अभी स्टूडेंट्स जो पास आउट हो रहे हैं उनके पास नहीं है। जो भी प्रैक्टिकल स्किल्स हो गए थ्योरेटिकल नॉलेज को छोड़ के। ओके, सो कंपनीज नीड इंजीनियर्स हु कैन इमीडिएटली कंट्रीब्यूट टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। अभी कंपनीज जब हायरिंग करती है, उनके कुछ प्रोजेक्ट चालू होते हैं, तो वो प्रोजेक्ट कंपनीज की ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि जिस कैंडिडेट को हम इंटरव्यू ले रहे हैं, जिस कैंडिडेट को हम हायर कर रहे हैं, उस कैंडिडेट ने फर्स्ट डे से ही कंपनीज में अपना वर्क चालू कर देना चाहिए। मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है, पर कुछ ट्रेनिंग पीरियड तो चाहिए ही। ये तो मतलब एक्सपेक्टेड है कि ट्रेनिंग पीरियड में हमें चाहिए। तो ऐसा कोई कैंडिडेट है जो इस ट्रेनिंग पीरियड को कम कर सके, तो वो उसके बाद ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा हो, जो ग्रास्पिंग स्किल्स है कि मैं कुछ भी नया मुझे दे दो मैं सीख सकता हूँ, ये स्किल अगर आपके पास है तो आपको तुरंत ही हायरिंग हो सकती है अगर उनका कुछ प्रोजेक्ट ऑनगोइंग होगा तो। ओके, सो वही है, कंपनीज नीड इंजीनियर हु कैन इमीडिएटली कंट्रीब्यूट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट एंड रिड्यूसिंग ट्रेनिंग टाइम एंड एक्सेलरेटिंग प्रोडक्टिविटी। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी। So in today's fast evolving engineering design landscape, okay, so this is the particular first point is the faster design and better accuracy। Okay, so आप
जो भी सॉफ्टवेयर सीखेंगे, कैड सॉफ्टवेयर हो गया, 3D मॉडलिंग आपको आती है, तो वो उसके जो भी आपकी डिजाइनिंग की जो स्पीड होगी वो क्या होनी चाहिए, फास्टर डिजाइन, बेटर एक्यूरेसी, प्रिसीजन आपका बहुत बेटर होना चाहिए। ये प्रिसीजन आपको कैसे मिलेगा, डेली प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस करेंगे कैड मॉडल की, जो भी आप सीखेंगे, तो वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपकी एक्यूरेसी जो होगी वो आपकी इंक्रीज होगी, फास्टर डिजाइन एंड बेटर एक्यूरेसी। ओके, सो दिस रिड्यूसेस रिवर्क, सेव्स टाइम, इम्प्रूव्स ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी। तो जो भी प्रोसेस होगा, प्रोसेस टाइमिंग होगा, वो क्या हो जाएगा, रिवर्क का जो टाइम होगा वो सेव हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, टाइम सेव हो जाएगा, ओवरऑल जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। तो ऐसे स्किल्स आप में होने चाहिए, जैसे कि इंडस्ट्री रेडी स्किल सेट चाहिए आपके, जॉब रेडी होने चाहिए जो भी इंजीनियर्स चाह रहे हैं, जैसे कि स्पेशली मैकेनिकल में, ऑटोमोटिव में, सिविल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, जो भी इंजीनियर्स अप्लाई अगर जॉब के लिए जा रहे हो, जॉब रेडी होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर स्किल्स हो गया, थ्योरेटिकल स्किल्स हो गया, आपकी जो डोमेन की नॉलेज है, जो भी आपके जो 4 साल में आपने जो सब्जेक्ट सीखे वो सब, better collaboration and innovation. Okay, so engineers can quickly modify design, share design models, and explore innovative solutions efficiently. Career growth opportunities. Professionals with strong design software expertise stand out in competitive job market. ओके, तो जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर एक्सपर्टीज हो, जो भी सॉफ्टवेयर स्किल्स हो, वो अगर आपके पास है तो आप कॉम्पिटिटिव जो जॉब मार्केट है उसमें स्टैंड आउट करेंगे, 100% करेंगे, क्योंकि आपके पास वो स्किल सेट है अवेलेबल, जो भी इंडस्ट्री को तुरंत चाहिए, जिसकी आपको ट्रेनिंग वो प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर वो आपके पास ऑलरेडी है तो उनका ट्रेनिंग पीरियड कम हो जाएगा। ओके, सो दीज स्किल्स ओपन डोर टू बेटर रोल्स एंड हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। ओके, सो ये स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, और वो स्किल्स कौन से वो हम इस सेशन में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं स्किल्स के बारे में। तो मैकेनिकल डिज़ाइन में स्किल्स की अगर बात करेंगे, डिज़ाइन स्किल्स की, तो सबसे पहले 3 पिलर्स होते हैं, द 3 पिलर्स ऑफ डिज़ाइन सॉफ्टवेयर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फर्स्ट इज कैड, CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। सो व्हाट इज कैड, जो भी हम 3D मॉडल क्रिएट करते हैं या फिर 2D ड्राफ्टिंग करते हैं, वो सब क्या हो गया, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, सो क्रिएटेड 3D मॉडल एंड टेक्निकल ड्राइंग्स essential for product development from initial concept to final manufacturing। जो भी इनिशियल आपका कॉन्सेप्ट होगा, तो कॉन्सेप्ट हो गया, आइडिएशन हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम जो भी था आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो नेक्स्ट स्टेप आपका जो होगा वो होगा आपका कैड मॉडल डिजाइन करना। सो कैड मॉडल डिजाइन करेंगे, ठीक है, उसके बाद कैम है, और कैड के पास जो स्टेप आता है वो CA होता है। CA मतलब कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। ओके, यू कैन सी दिस, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। व्हाट इज कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग? With the help of computer aided engineering software, you can analyze the performance before building the prototypes। okay, so जो भी परफॉर्मेंस होगा वो आप जो करेंगे एनालाइज करेंगे, एनालाइज परफॉर्मेंस कर सकते हैं, या फिर वो जो आप मॉडल क्रिएट करेंगे उसको जो भी मटेरियल यूज होगा, जो भी स्टील होगा, या फिर जो भी मटेरियल आप इसको मतलब यूज करने वाले हैं, तो आप उस मटेरियल की या फिर उस मॉडल की स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस हो गया, अगर वो फ्लूइड है तो फ्लूइड के लिए एनालिसिस, फ्लूइड हमारे पास सॉफ्टवेयर है, वो सब सॉफ्टवेयर से आप क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। आप उस जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी डिज़ाइन होगी आपकी, जो भी प्रोटोटाइप होगा आपका, उसके आप स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टेस्ट कर सकते हैं, थर्मल बिहेवियर, अगर अलग अलग टेम्परेचर में वो कंपोनेंट कैसा या फिर वो प्रोटोटाइप कैसा बिहेव करता है वो आप उसमें एनालाइज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होता है CAM, कैम। व्हाट इज कैम? कैम इज अ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले तो पार्ट हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गई वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से क्रिएट करते हैं, पर एक टाइम आता है जब उस पार्ट को हमें मशीनिंग करना पड़ता है। ओके, मशीनिंग क्या होता है, वो पार्ट को हम मशीनिंग करते हैं, मशीनिंग करते हैं, तो मशीनिंग में क्या हो गया, वो पार्ट को हम मतलब कुछ टूल पाथ हो गए, जैसे कि हमारे पास मशीन होती है CNC मशीनिंग। ओके, CNC मशीनिंग जो भी होंगे तो हमें उनको कुछ लैंग्वेज देनी पड़ेगी। अगर CNC मशीन है तो उसकी लैंग्वेज क्या है, G कोड्स, M कोड्स। तो G कोड्स क्या होते हैं, जो भी टूल पाथ होता है हमारा, जो भी टूल अगर हम मशीनिंग कर रहा है उसको टूल पाथ जनरेट कर सकते हैं। और वो जनरेट कैसे करेंगे, तो वो हम करेंगे कैम सॉफ्टवेयर की हेल्प से। हमारे पास कैम सॉफ्टवेयर है, मास्टर कैम, NS कैम बोल के, तो ऐसे बहुत सारे कैम सॉफ्टवेयर से, तो उनसे क्या होता है, हम जो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसकी जो मशीनिंग होगी
तो टूल के जो पाथ्स है, टूल पाथ्स, वो हम इससे जनरेट कर सकते हैं। ओके, ट्रांसफॉर्म डिजाइन इनटू मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शन. So this can bridge the gap between digital models and physical production on CNC machine and other equipments. Okay, so these are the three pillars of design software. So we will see the next. What is next? The essential software you should learn, और यू कैन से इसेंशियल कैड सॉफ्टवेयर. कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर है? सबसे पहले सॉफ्टवेयर जो है वो है ऑटो कैड. ऑटो कैड मतलब इसेंशियल फॉर 2D ड्राफ्टिंग. ऑटो कैड आपको आना ही चाहिए. तो व्हाट इज ऑटो कैड? इट इज इसेंशियल फॉर 2D ड्राफ्टिंग and documentation, universal tool for creating technical drawings. You can create technical drawings, schematics, जो schematics होंगे, manufacturing specifications that comply with standards. Okay, तो AutoCAD कौन कौन यूज़ कर सकते हैं? ऐसा नहीं है मैकेनिकल इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, AutoCAD इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी यूज़ करते हैं, AutoCAD सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स भी यूज़ करते हैं. ये क्यों यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिकल तो उनके स्कीमेटिक्स और वायरिंग जो है उनके लिए यूज़ करते हैं, और आर्किटेक्ट वाले लेआउट्स के लिए यूज़ करते हैं, प्लान्स हो गए उनके. ओके, सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम उसके जो टेक्निकल ड्राइंग्स हो गए, स्कीमेटिक्स हो गए और मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशंस हो गए, वो हम इसके लिए ऑटोकैड यूज़ करते हैं. ओके, सो ऑटोकैड. नेक्स्ट वी हैव सॉलिडवर्क्स. ओके, सॉलिडवर्क्स इज डेवलप्ड बाय डसॉल्ट सिस्टम. डसॉल्ट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है. सेम गोज फॉर द कटिया V5. सो कटिया V5 भी डसॉल्ट सिस्टम्स का ही सॉफ्टवेयर है. ऑटोकैड ऑटोडेस्क का है. SolidWorks is the industry standard for mechanical design. Okay, widely used across automotive, aerospace, and consumer products. SolidWorks is widely used. Excellent for assemblies and parametric modeling. पैरामेट्रिक मॉडलिंग हम कर सकते हैं, और सॉलिडवर्क्स का यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, थोड़ा यूज़र फ्रेंडली होता है. पर अनलाइक द सॉलिडवर्क्स, कटिया जो सॉफ्टवेयर है वो जो उसका यूज़र इंटरफेस है, अगर आपको आता है तो आप प्रैक्टिस से कौन सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं. आपको बस एक सॉफ्टवेयर 3D का आपको मास्टर कर देना चाहिए, उसके बाद आपको बाकी के जो सॉफ्टवेयर है वो आपको आ जाएंगे. सो नेक्स्ट इज द कटिया सॉफ्टवेयर. ओके, कटिया सॉफ्टवेयर प्रेफर्ड इन एरोस्पेस एंड ऑटोमोटिव सेक्टर्स, and it has advanced surfacing modeling capabilities, make it ideal for complex geometry and large assembly management. So CATIA, we can use CATIA for advanced surfacing modeling. ओके, सर्फेस मॉडलिंग हम कर सकते हैं, एडवांस सर्फेस मॉडलिंग, जैसे कि एरोस्पेस में जो उनके जो फिन्स होते हैं, जो भी उनके पार्ट्स होते हैं, वो सब एकदम प्रिसीजन होने चाहिए. तो सब कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री होती है, तो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री हम कटिया में क्रिएट कर सकते हैं. लार्ज असेंबलीज मैनेजमेंट, जो भी लार्ज असेंबलीज होंगी, असेंबलीज में सब असेंबलीज, ऐसे बहुत सारी असेंबली, ये कॉम्प्लेक्स जो असेंबली मैनेजमेंट है ये कटिया में हम इजीली कर सकते हैं. इसलिए कटिया जो सॉफ्टवेयर है वो ज़्यादातर प्रेफर्ड इन एरोस्पेस एंड ऑटोमोटिव सेक्टर्स. ओके, नेक्स्ट वी हैव क्रियो प्रो इंजीनियर. सो क्रियो, previously known as Pro Engineer, is also a CAD software. It is a powerful parametric design platform, strong in product development workflows with robust simulation integration and design optimization capabilities. So Creo is a parametric software. We can do modeling in Creo with a very complex parametric. Parametric, what is parametric? Parameters. The parameters of sketch are the length. Okay, circle is we have radius. So there are very parameters in the model. So we can create a powerful parametric design platform. It is a platform. Okay, so we will next see the CAM softwares. So CAM softwares, why CAM skills set you apart. Okay, so understanding manufacturing process gives you competitive advantage. Okay, so manufacturing process अगर आप सीखेंगे तो आपको वो advantage रहेगा आपको. ठीक है, CAM software translate your design into machine instructions. So what are the, that instruction is the language of the machine, G codes and codes. Okay, so we translate our design into machine instruction. We give instruction to the machine कि कैसे करना है. ठीक है, मेकिंग यू वैल्यूएबल इन प्रोडक्शन फोकस्ड रोल. जो भी आपके प्रोडक्शन में अगर आपको जाना है, मेनली आपको मशीनिंग सेक्टर में अगर जाना है, जो भी सीएनसी मशीन के अराउंड आपको काम करना है, आपको वो पसंद है, तो आप कैम स्किल्स गेन कर सकते हैं. ठीक है, उसमें सबसे फर्स्ट होता है मास्टर कैम है, फ्यूजन 360 है, या फिर सीमंस का एनएक्स कैम सॉफ्टवेयर है. एनएक्स कैम सॉफ्टवेयर का एनएक्स कैड सॉफ्टवेयर भी है, एक कैड सॉफ्टवेयर, और कैड सॉफ्टवेयर में ही इंटीग्रेटेड हमें कैम
मिल जाता है. Okay, so master cam most widely used cam software, excellent for milling, turning and multi-axis machining. Okay, so we can do this in the master cam. We generate the tool paths. The tool path generation we can do with the master cam or any cam software. We can do the tool path generation. Okay, next we see the Fusion 360. It is a CAD and CAM platform. Okay, so integrated CAD CAM platform, then cloud-based collaboration with strong generative design features. Okay, so this is the features of the Fusion 360. We will see the next cam. This is the enterprise level manufacturing solution, advanced capabilities for complex part. So it has the advanced capabilities for complex part with seamless integration into product lifecycle management systems. Okay, so these are the cam softwares. You can gain these skills. Next we have CAE tools for simulation and analysis. So what are the CAE tools? Computer aided engineering tools. First we have ANSYS. Okay, so ANSYS is used for structural, thermal and fluid analysis. Workbench, there is ANSYS workbench and there is ANSYS fluid. Okay, so in the workbench we create a structural and thermal, and then in the fluid we create a fluid. Okay, industry leading simulation platform covering the finite element analysis FVA, computational fluid dynamics and electromagnetics, used extensively in aerospace, automotive and energy sector for validating complex design. Okay, so next software is the Abacus. There is Abacus software just like the analysis, but it has advanced non-linear simulation FEA, finite element analysis हम इसमें कर सकते हैं. Specializes in complex material behavior, large deformation analysis, preferred for research application. Research application में ये preferred करते हैं. Next we have SolidWorks simulation. It is the integrated design validation built directly into SolidWorks environment for seamless workflow, ideal for rapid design iteration with stress analysis, motion studies, and thermal simulation, accessible to designers. Okay. So next we will see importance of dimensioning and importance of geometric dimensioning and tolerancing. GD&T. Okay, so GD&T is very useful and हर इंजीनियर को GD&T आना ही चाहिए, जो भी मैकेनिकल इंजीनियर हो. GD&T का यूज़ इसलिए यूज़फुल है क्योंकि हमें जो भी इंडस्ट्री में डायग्राम्स होते हैं वो सब, जो ड्राइंग्स होती है, जो भी टेक्निकल ड्राइंग्स होती है वो रीड करना हमें आ जाता है. क्यों? क्योंकि हमने GD&T सीखा है. अभी GD&T क्या है? GD&T है ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग and tolerancing, GD&T. So this is a standardized language used in mechanical design engineering. Okay, so this is the language. जो भी language है, ये language है mechanical design engineering की, to clearly define the allowable variation in parts geometry. जो भी allowable variations हो गए, जो भी variations हो गए, वो उसको हम clearly define कर सकते हैं. कैसे? दिस लैंग्वेज की मदद से, मतलब ज्योमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग की मदद से हम वो डिफाइन कर सकते हैं. सो दिस इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज. मतलब आप इस लैंग्वेज को हम दूसरे क्लाइंट्स होंगे हमारे, जो भी इंडस्ट्री में दूसरे क्लाइंट्स होंगे, दूसरे फॉरेन के होंगे या फिर दूसरे रीजन के होंगे, उनसे भी हम ये मतलब उन्हें बता सकते हैं कि ऐसा है. ठीक है, वेरिएशंस जो भी होंगे, ड्राइंग रीडिंग जो भी वो भी कर सकते हैं. सो दिस इज वेरी यूजफुल, ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग. सो अनलाइक द बेसिक डिमेंशन, जो भी बेसिक डिमेंशंस होते हैं या फिर GD&T छोड़ के जो भी पहले ड्राइंग रीडिंग्स होती थी, जो भी उनकी लैंग्वेज थी, सो जो भी बेसिक डिमेंशंस थे, GD&T फोकसेस ऑन फंक्शन, फिट एंड मैन्युफैक्चरबिलिटी. ओके, सो मैन्युफैक्चरबिलिटी and function and fit. This is the main focus of the GD&T. Okay, this ensures the part works correctly in real world assemblies. Okay, so real world assemblies में जो भी पार्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, जो भी मॉडल हम क्रिएट कर रहे हैं, वो करेक्टली जो है उसमें. So GD&T focuses function, fit and manufacturability. Okay, so why GD&T is important? Why the geometric dimensioning and tolerancing is important in today's world or 2026? Okay, so when GD&T, we learn GD&T. So GD&T eliminates ambiguity in engineering drawings
by precisely controlling form. Okay, so what it controls: the form, then the orientation, the location, and the runout features. This helps designer communicate design intent clearly to manufacturing and quality teams, reducing errors, rework, and production cost. Okay, so GD&T eliminates, eliminates the engineering brand by precisely controlling form. It controls form, orientation, and location, and runout of features. There are features, so it controls that features. Okay, you see this one now. So what it actually helps the designer communicate design intent. Okay, so whichever design intent is there, the designer can communicate that intent with another designer clearly to the manufacturing and quality teams. So एक कम्युनिकेशन बिल्डअप होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी टीम्स में, क्योंकि GD&T स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है, तो उन्हें भी ये पता चलेगा कि ये बंदा हमें क्या कह रहा है, ये जो डिज़ाइनर है ये मैन्युफैक्चरिंग को जो भी कहेगा उन्हें वो समझ में आएगा. सो इससे क्या होगा, रिड्यूसिंग एरर्स के रिड्यूस हो जाएंगे. ठीक है, जो भी एरर्स अगर थे तो वो सब रिड्यूस हो जाएंगे. उसके बाद रिवर्क रिवर्क करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, and production cost will be less. So this reduces the errors, rework, and production cost. Okay, we'll see this one by one. Key benefits of GD&T. So what are the key benefits of GD&T? We will see this one by one. What are the key benefits of GD&T? Geometric dimensioning and tolerancing ensures proper fit and assembly of parts, improves manufacturing consistency, allows functional tolerances instead of overly tight limits, enhances inspection and quality controls. Okay, so we will see this one by one. First one, what is first one? Ensure properly fit and assembly of part. So GD&T ensures, what it ensures? It ensures a proper fit. It ensures a proper fit and assembly of parts. So if we model the parts, okay, so we जब हम model करते हैं, create 3D models, okay. So what happens? There is no proper fit. Okay, there is a tolerance issue and assembly नहीं होती है. तो इस GD&T का जो बेनिफिट है वो क्या है कि हम प्रॉपर फिट एंड असेंबली ऑफ पार्ट्स ये इंश्योर कर सकते हैं कि हो ही जाएगा. ओके, सो GD&T के हेल्प से. नेक्स्ट व्हाट वी हैव, we allows functional tolerances instead of overly tight limits. What it ensures, it allows the functional tolerances, जो भी tolerances हुए वो functional tolerances हुए, it allows the functional tolerances instead of overly tight limits. जो भी tight limits होंगी वो limits नहीं सेट करेंगे, वो क्या करेंगे, जो tolerances zone होगा, जो भी tolerance zone होगा वही functional tolerance ही allow करेगा. Okay, so what it do, it reduces the errors. Okay, and ensures the fit and assembly of parts. Then improves manufacturing consistency. जो भी manufacturing consistency होगी, जो भी हम part create करेंगे, जो भी prototype create करेंगे, उसकी जो manufacturing consistency होगी वो improve हो जाएगी. Okay, so next we have enhances inspection and quality control. Okay, so what it do, it enhances the inspection and quality control. Quality control department में जो भी वो ड्राइंग हम उन्हें देंगे एज ए डिज़ाइन, जो भी एज R&D, जो भी R&D डिपार्टमेंट हो गया, डिज़ाइन डिपार्टमेंट हो गया, इनके बीच में कम्युनिकेशन तो होगा ही, पर इनसे क्या होगा कि जो भी क्वालिटी डिपार्टमेंट है वो इन्हांसेस इंस्पेक्शन में इन्हांसेस लाएगा, फिर उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल ईजी हो जाएगा क्योंकि स्टैंडर्डाइज रीडिंग हो जाएगी और GD&T की हेल्प से प्रॉपर फिट एंड असेंबली ऑफ पार्ट्स हो रहा है. ओके, सो these are the key benefits of design of GD&T. Okay, next we will see geometric dimensioning and tolerancing in modern mechanical design. Okay, so in modern mechanical design era, what are the GD&T's impact or importance of the GD&T? Okay, so we'll see with CAD software and digital manufacturing, GD&T has become even more critical. Okay, so जब से हमें CAD सॉफ्टवेयर स्टार्ट हुआ है या फिर डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग जो भी है, तो GD&T का जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस इंक्रीज हो गई है. इट इज़ बिकम एज मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल वन मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर शुड लर्न इन टूडेज
और इन 2026 GD&T आपको एकदम बेसिक ही पता होनी चाहिए ही चाहिए. ओके, सो it enables it enables accurate CNC machining. जो CNC machining होगी, it enables the accurate CNC machining, automated inspection. Okay, automated inspection. Then the global collaboration, standards defined by organization. So you see, standard defined by organization like ASME. ASME is a standard, American standard. So organization like ASME help maintain consistency across the industry and country. Okay, across the industry and country कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है. अगर मानो वो इंडिया से है एक क्लाइंट और दूसरा क्लाइंट दूसरी कंट्री से है, तो क्या होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है. जो भी स्टैंडर्ड डिफाइन होंगे तो एक ही स्टैंडर्ड होगा कि लैंग्वेज होगी. लैंग्वेज कैसी, लैंग्वेज इज द GD&T लैंग्वेज. इट इज अ स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज यूज्ड इन मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियरिंग. ओके, what to clearly define allowable variation in parts geometry. Okay, so this is the importance of geometric dimensioning and tolerancing in 2026. So मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर अगर आप हो तो आपको, और अगर आप सीख रहे हो, आप सेकेंड ईयर में हो, आप कॉलेज में हो या आप पास आउट हो, आपको GD&T पता होनी चाहिए ही चाहिए. ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी role of AI in mechanical design engineering. Okay, so AI, artificial intelligence in today's world is the most important और ट्रेंडिंग जो चीज़ है वो है, क्योंकि AI हर तरफ है, हर तरफ AI है. AI से हम जो काम करते हैं वो इजी हो जाता है. अब ऐसा भी है कि AI की वजह से कुछ जॉब्स जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. अगर AI को आप एज अ टूल देखोगे तो वो आपको हेल्प करेगा. AI एज अ टूल डिज़ाइन में हेल्प कर सकता है. क्यों? क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन का वर्क है, जो भी रिवर्क है इधर है, और या फिर जो भी टाइम है, जो भी टाइम ड्यूरेशन है एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का, वो रिड्यूस हो सकता है. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट यानी इन्हीं आइडिएशन के प्रोसेस से बाद में फाइनल आउटपुट, फाइनल प्रोडक्ट, या फिर मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद, मशीनिंग होने के बाद फाइनल जो प्रोडक्ट आता है, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट AI की हेल्प से हम रिड्यूस कर सकते हैं. इसका ड्यूरेशन हम रिड्यूस कर सकते हैं. क्यों? अगर आपको AI एज अ टूल आपको यूज़ करना है तो आप के लिए वो डेंजर नहीं होगा, वो आप उसको टूल एज अ टूल यूज़ करोगे. ठीक है, सो ऐसे ही इसको देख सकते हैं कि AI एज अ टूल इन designing. Okay, so we will see artificial intelligence is rapidly transforming mechanical design engineering, making design faster, smarter, and more efficient. Okay, what it is doing, it is rapidly transforming the mechanical design engineering, making design faster, smarter, and more efficient. Okay, so faster means it reduces the duration of product life cycle management, and smarter, of course it's smarter, and more efficient. Efficient in sense it is cost efficient, it is time efficient. Okay, so it is overall, it is more efficient. This process, if we use AI as a tool, it will be more efficient in design. Okay, so first one, so today we have two softwares or two AI tools with us. So first one is AI powered tool in AutoCAD तो हमें पता है, it is a 2D drafting and designing software. Okay, so there are AI powered tools. We can use AI powered tools in AutoCAD. Okay, so modern version of AutoCAD now integrates AI features. There are AI features in AutoCAD that assist engineers or that assist the designers throughout the design process. Okay, so it is just like the ChatGPT. It is just like the, it can help us find the solution between the process of the designing. Okay, so these tools can automatically detect design errors. So it will automatically detect design errors, suggest optimized geometries, and speed up the repetitive drafting tasks. AI driven commands help in faster layer management, object recognition, and smart dimensioning, allowing engineer to focus more on innovation rather than manual correction. Okay, so with support from companies like Autodesk, AI is turning traditional CAD drafting into an intelligent design workflow. Okay, what it is doing, it is turning a traditional CAD drafting into an intelligent design workflow. Okay, so these are the AI powered tools in AutoCAD. Then there is a AI based 3D modeling software. What is it? What it is?
It is a 3D modeling software, but it is AI based. Okay, so we can create an entire model with just a prompt. Text prompt से हम create कर सकते हैं, या फिर we can create we can create it using coding. There is a coding also in 3D modeling or in Zoo. So the software is Zoo software, Zoo 3D modeling software. So AI-driven 3D modeling platforms such as Zoo take design intelligence a step further. Okay? So this tool can generate a 3D model. It can generate a 3D model based on minimal inputs. Minimal inputs in the sense we can generate a 3D model with the help of prompt. Learn from past design. It learns from the past design, so it can minimize the errors happens to the next design, because it is a repetitive if it is a repetitive part, okay, and suggest a multiple optimized design variation. It suggests the multiple for mechanical engineer. This means faster prototyping. Okay, so with the help of AI we can achieve the fewer design iteration, or we can create a faster prototyping, better material usage, and improve structural performance. Okay, so these all can be achieved with fewer design iteration. Okay, you can achieve that. Okay, so there is a faster prototyping help. So this is the AI. So if we see AI as a tool, it will be more beneficial to the mechanical design industry. Okay, so this is the role of mechanical design engineering, role of AI in mechanical design engineering, artificial intelligence. So, okay, so this is rapidly transforming the mechanical design engineering, making design faster, smarter, and more efficient. So next we will see matching software skills to career path. So before this, there are many soft skills also. So we have to consider that skills too when we are applying a design or any design industry. If we are the candidate, then you must have a soft skills such as you must have a communication skills, you must have presentation skills. Okay, so your communication skill, presentation skills, so overall your personality or personal skills, personal soft skills can make you a top candidate in front of the employer or hiring, जो भी आपकी hiring कर रहे हैं. Okay, so you must have the soft skills such as communication, presentation. Okay, you must have a portfolio. Your portfolio should be small. Your resume must be good. Okay, so we'll see the matching software skill to career path. आपका जो भी करियर पाथ होगा, ओके, आपका अगर कुछ डिफाइंड पाथ है, जैसे कि आपको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ही जाना है, सो फर्स्ट वन इज द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. सो इफ यू हैव अ ड्रीम टू गो इनटू द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, you must learn or you must prioritize the skills that are now presently being used in the automotive industry. So your priority should be that skills which are currently in demand or in use in the specific domain or specific industry. So in the automotive industry, if you want your dream job is in the automotive industry, your priority should be CATIA. Okay, why? Because it has a advanced surface modeling feature. You can do advanced surface modeling in CATIA. So the priority for automotive industry or aspiring candidates must be CATIA. You must learn CATIA, then Creo for design, and then ANSYS. You must learn the ANSYS for crash analysis and thermal management. Then knowledge of PLM यानी product life cycle management systems. Okay, if you want your job to be aerospace sector, if you want to do job in aerospace sector, if you want to go in the aerospace sector, your priority should be the skills that are in the demand or in use in the aerospace sector. First is the CATIA. Why? Because it has a complex surface modeling. Okay, then advanced FEA tools. FEA यानी finite element analysis tools. Okay, then understanding the composites. You must have the understanding of the composites and lightweight structures. You must have that knowledge because it is being used in the aerospace sector. Okay, next is the manufacturing rules. If you want to
do your job in the manufacturing sector, you must have a knowledge of SolidWorks plus CAM software, which is master CAM, or Siemens NX CAM. Okay, Siemens NX has a software of CAD and CAM integrated software. It has, so you must have the skill. You must learn the Siemens NX CAM software. Okay, CAD and CAM software. So it is very useful if you want your job into the manufacturing sector. Then practical CNC programming knowledge and DFM. Okay, series on that one. तो दीज आर द सॉफ्टवेयर स्किल्स टू द करियर पाथ. जो भी आपका करियर पाथ होगा उस हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर स्किल्स गेन करने पड़ेंगे. नेक्स्ट, कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट मेक. स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो एज अ फ्रेशर हो गया है और एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, वो कौन सी मिस्टेक्स अक्सर करते हैं वो हम देखेंगे. तो फर्स्ट मिस्टेक इज लर्निंग टू मेनी टूल्स. मतलब हम क्या करते हैं, बहुत सारे टूल्स सीख जाते हैं. लर्न द टू मेनी टूल्स इन, जो कि भाई सब अगर सीखेंगे तो उतने हमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगे. पर ऐसा है कि अगर आपको एक स्पेसिफिक सेक्टर में जाना है, अगर इफ़ यू वांट टू गो इनटू द ऑटोमोटिव सेक्टर, सो यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ कटिया करियो. ओके, व्हाई? बिकॉज इट इज़ मोस्ट प्रेफर्ड सॉफ्टवेयर इन द ऑटोमोटिव सेक्टर. सो learning too many tools is not the solution. It is, you must have familiar with the tools, but depth beats breadth. Okay, so the depth beats breadth. Master one primary CAD, so you must master the one primary CAD platform. First one, master the CAD platform thoroughly before exploring others. Okay, so पहले आपको एक कैड सॉफ्टवेयर मास्टर करना है, और उसके बेसिस पे आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर की सिमिलरिटीज देख देख के एक्सप्लोर कर करके सीखना है. ओके, वन सॉफ्टवेयर शुड बी योर master. You must master that software. Okay, employers values expertise or familiarity with numerous tools. Your expertise with one software is expected from the employer. Okay, neglecting the manufacturing perspective. The next one is neglecting the manufacturing perspective. Beautiful design means nothing if they can't be manufactured economically. Okay, so beautiful design don't chase the perfection. Okay, you must chase the perfection in the sense of mechanical design. Precision होना चाहिए, पर beautiful design means nothing if they can't be manufactured economically. Always consider how your parts will actually be made assembled. Okay, ignoring industry standard best practices and keeping portfolio development. आपका portfolio development होना चाहिए. आप create a diverse portfolio, create a various models in the CAD models create करते रहिए. ठीक है, you must have the knowledge of design intent, parametric modeling techniques, proper documentation. This matters as much as knowing button solution. Okay, learning professional workflow early, and you must learn the standards used in the industry you are applying for. Okay, next is your learning roadmap. Start to placement. Second year. Okay, so very first is the first year we are in the basic only. So starts with the second year. Your fundamental जो भी सब होगा वो आपका second year से start होगा. मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, second year से. तो second year is a foundation building. अगर आप second year में है तो आपका foundation building start होना चाहिए. आपको AutoCAD सीख लेना चाहिए एकदम बेसिक के लिए, और begin with the SolidWorks. For CAD you can begin with the SolidWorks and complete. Okay, देन हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रोजेक्ट कीजिए, सिंपल पार्ट्स क्रिएट कीजिए, फिर कॉम्प्लेक्स पार्ट क्रिएट कीजिए. ओके, थर्ड ईयर स्किल डेवलपमेंट. जो भी स्किल्स आपने सीखे, अगर आपने सॉलिडवर्क्स सीखा तो उसके डेवलपमेंट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और उस बेसिस पे आपको दूसरे सॉफ्टवेयर भी सीखने मिलेंगे. सी फंडामेंटल सीख सकते हैं आप. यू कैन लर्न द सी और कैम सॉफ्टवेयर. ओके, इन द थर्ड ईयर. देन वी हैव फाइनल ईयर इंडस्ट्री रेडीनेस. Add CAM for manufacturing rules, advanced CAE for analysis. You can learn the advanced CAE. Okay, create a comprehensive portfolio demonstrating end-to-end design capabilities. Then placement preparation, refine portfolio presentation, prepare to discuss design decision, practice software demonstration, obtain certification for key tools to validate your expertise on your CV. Okay, so your CV must be strong, so that if an employer hires you, it first see your CV and then do your interview. Okay, so resume आपका वो देखेगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा. तो आपका resume strong होना चाहिए. ओके,
सो की टेकअवेज हम देखेंगे अब ये दिस इज द लास्ट स्लाइड। तो आज हम देखेंगे आज हमने क्या क्या देखे व्हाट वी हैव सीन टुडे। तो बिल्डिंग योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, की टेकअवेज फॉर सक्सेस, मास्टर वन प्राइमरी कैड प्लेटफॉर्म डीपली बिफोर expanding your toolkit. You must master a first software, single software. You should have your mastery over the software. Okay, so when you master the software, or you when you master a software, for example you can master SolidWorks, and on the basis of SolidWorks you can learn Creo, CATIA, or NXCAD. Okay, you can learn that software, Fusion 360. You can learn this software, but you must master any one software first. May be it SolidWorks or CATIA, you must have a mastery over that software. Okay, next one is the understand the complete design to manufacturing workflow. Okay, you must understand the complete product lifecycle management from design to manufacturing. Okay, you must have the knowledge of the complete workflow, not just the individual tools. Okay, means you must learn the CAD softwares, then a CAM software, CAE softwares. Okay, so these are the softwares. You must have the complete workflow if you want your if you want to do job in design or mechanical design industry. Okay, develop practical CAE skills to validate and optimize your device. You must develop a practical CAE, CAD, CAM, प्रैक्टिकल आपको वो स्किल्स आने चाहिए. ओके, क्रिएट अ पोर्टफोलियो शोकेसिंग रियल प्रॉब्लम. आपने रियल में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे. इफ यू हैव क्रिएटेड और you have a solution for the real world problem, create the if you have created a portfolio, create the portfolio, not just tutorial exercises. Okay, सो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व किए तो वो ज़्यादा आपके लिए यूजफुल हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट, स्टे करंट विद इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी. यू मस्ट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द करंट इंडस्ट्री, इन द करंट मैकेनिकल डिजाइन एरा. ओके, सो यू मस्ट aware of the current industry trends and emerging technologies like AI, generative design. You must have the awareness of that trends. Okay, your design software skills are investments in your engineering career. This is not just learning a skills, it is the investment for your future or your engineering career further. Okay, so start early, or if you are some late, so it is never too late to learn any software. You can start from wherever you are. If you are a fresher, you can start. If you are currently working in another department like quality production, you can start learning this software wherever you are. On wherever step you are, you can start learning. Okay, it is not mandatory to start early. You can start wherever you are. Okay, next, practice consistently. Your practice is what will develop your design skills. Okay, the time you invest now will pay dividends throughout your professional journey. Okay, focus on developing practical expertise that employers need. Okay, so these are the key takeaways what we have learned today. Okay, so you have to start from wherever you are. You start just learning a software, CAD software, then do the CAE, CAM. You can learn this step by step. Okay, start with the CAD software and practice daily. You have to practice consistently. Consistency should be your main फोकस. कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी. आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे, आपका सॉफ्टवेयर आपको मास्टर हो जाएगा. ठीक है, यू कैन मास्टर एनी सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ कंसिस्टेंसी. ओके, प्रैक्टिस कीजिए सर. फोकस ऑन डेवलपिंग practical expertise that employers need. The time you invest now will pay dividends throughout your professional journey. Okay, so invest time in learning these skills. Okay, building soft skills, your presentation skills, communication skills. Okay, you have to start investing in the CAD CAM CH skills to gain the knowledge for the or to okay. So thank you. This is for the today session. This is we will meet in the next session with the next topic. Thank you for listening. Thank you.